see rule sets, right? Rule sets, Yes. see, as given shown in this diagram, rule sets contain risk. All right. Means rule set contains the definition of risk. And what is a risk? It contains two conflicting functions. Two or more means there could be Okay. two T codes or more T codes. Understood? Okay. Okay. And what is function? Function is the collection of actions and permissions. Means T code and authorization. Okay. Okay. T codes and authorizations. Meaning T code and authorization will be called actions and permissions. Okay. These actions, this action and permission is stored in a function. All right. And when there are two conflicting functions kept together, they form a risk. Means they conflict with each other or with the organizations working. Okay. So they are called risk, and this information is stored in a rule set. For example, let me show you here. Oh, all right. WBC, open up, continue this checking. Are you able to use NWBC? Yes. All right. Okay, yeah, sure. Role setup. Yeah, all right. See, first thing is actions and permissions are stored in functions. These are the functions. All right. Let's open this Yes. one. A11. See, this is function one, which is stored SU01. All right. Function one. Then we will open A12. It stores PFCG T code. It actions, and here we have is what I would say authorization objects stored plog. Okay, wait a second. Second. Yeah, see, these are active auth object for this T code. Okay, they are stored in permissions, and action stores the name of the T code PFCG. Yes. So this is a function. Means function will store T code and auth object. Okay. Okay. A11 and A112. Sorry, A11, A11 and A12. This is the function. Then we go to access risk. A risk contains two or more conflicting functions. All right. For example, here it is. Oh, you have already made this, right, Monica? Yes. You have made these, right? I think. Yes, I think I have done this in while post installation steps. Okay. So see, all right. For example, see, 811 and 812. They both are two conflicting functions. They are stored in this risk ID.
Risk Z Yes. is 1. All right. Similarly, we can see the risk 1 because there are two T codes, two functions added here, A11 and A12. Okay. So this is the risk 1. This is a risk. And the information of this risk is stored in the rule sets. Okay. Okay. I think this should be the one. Okay, all right. Yeah. So means what I was telling is rule set contains risk, which and a risk contains information of conflicting functions, two or more conflicting functions, and the functions contains actions and permissions, decode and authorization. All right. Here I have tried to show an example as well. Means function 1 contains SU01 and its auth object. Function 2 contains PFCG. Function 3 contains SC38. Okay. Then I have created two risks. Risk 1 contains function 1 and function 2. And risk 2 contains function 1 and function 3. Then I have created a rule set which stores the information for risk 1 and risk 2 for both the risks. Do you want me to create this? Yeah, wait. Let's create it. Right? We have A11, or we'll have A11 and A12 or Monica, you have already created this rule set, right? Monica? यस यस अमित एक्चुअली मैंने क्रिएट नहीं किए थे मैंने तो वो सब जो आपने पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेप्स बताए थे ना हाँ वो सारे कर करके देखे थे तो अगर उनमें से कुछ हुआ है तो आई डोंट मैंने मतलब ये किए नहीं है ओके यहाँ पे तो आज मैंने छेड़ा ही नहीं था मैंने तो वो अपन उसमें एसपीआरओ के अंदर जो कर रहे थे ना वो चेंजेस ही करे थे उसके बाद तो अपनी थ्योरेटिकल क्लास हुई थी एसपीआरओ के अंदर जाके जो चीजें चेंज करने की वो करी All right, then let's create functions first. First of all, we create a function, right? ओके Okay. Oh. Globally है But we need to change the definition. यार police मैं तो 3 मिनट में काम कर लिया इतने तो सकेंगे सब कुछ डिपेंड करता है 01 किस सेंस में देखो हाइब्रिड है 2 days a week है लोकेशन से उनको फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्स में मूव करना चाहो तो वो भी मिल जाता है मतलब एक्सेस I'm using everything okay. तो और क्या बोलते हैं मतलब ऐसा होता है जिस डेटा में कभी कभी वर्क फ्रॉम होम पे What was the function? क्या बोलते हैं Click on create. जैसे मोबाइल अलाउंस Screen, right? Monica, the screen, नहीं right? बताया तो थोड़ा उसको बेनिफिट्स बताया Yes. और बोनस हमेशा 10% से प्लस रहेगा और The function मेडिकल वो देते हैं identity system will be बट मैं रोज काम कर रहा हूँ let's select वो this is ऑडिट में description test. Now we will add 8 लाख के दर्द लड़का action. See, we करते गया काम करके then what will be the system? We have to choose a that RC character. Let's choose this one. यहाँ पे This सीखिए is पढ़ती mitigation date. यहाँ मतलब डेवलपमेंट में सीखिए पढ़ती है ना वैसे ही मेडिकल Has इंश्योरेंस to be paid. हाँ जो इंटरनेट बिल है 1500 Then which रुपए action we will add? तो आप देख लें दो देना Let's
search Okay. SU01, no results found. Okay, we will have to change the system. SAP R3. Yeah, all right. Yeah, it have T codes. So let's use SU01 enter. Click on it. Okay. User maintenance status active. Then permission C. For SU01, auth objects are already input. All okay. Okay. Data has been saved. So we have created one AA01. This was one, not AA01. Yeah, all right. And close. Then we will create another AA02 basis. हमें ये ए से स्टार्ट करना होता है क्या फंक्शन आईडी? नहीं, ये डेपिट सी आप किस क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो नेमिंग जो न्यूमरोलॉजी होती है, नेमिंग कन्वेंशन, वो आपको प्रोवाइड करेगा, उस हिसाब से नेमिंग करना होता है। ओके, बट क्योंकि यहाँ पे कोई नेमिंग कन्वेंशन नहीं तो मैंने अपना Okay. चूज कर लिया A02। और मैंने चूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे Okay. देख रहे हैं कि आप जो है सारे A1 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऊपर हाँ. ही दिख जाए, ताकि मुझे, वरना इतने सारे हैं मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ जाए। दिख रहा है ना? Okay. Okay. Got it. Got it. ओके, हाँ हाँ. अच्छा मैं समझ गया, आपने एक्चुअली डाउनलोड करके वापस अपलोड किया होगा उसको शायद, तभी आपका नाम सब पे आ रहा है। हाँ हाँ हाँ. या आई अंडरस्टूड, ऑल राइट। हाँ. ओके, तभी आपका नाम सब पे आ रहा है। सो या वी वर क्रिएटिंग दिस A02। अभी हम फंक्शन बना रहे हैं ना? या अभी हम लोग फंक्शन बना रहे हैं सिर्फ। ओके, then we select again Okay. SAP R3 system, then action, select PFCG here, select move. Okay, now under permission we हमें will, फंक्शन बनाने की नीड क्यों है हमें यहाँ पे? okay, see actually T code and authorization object जो है वो, that's the concept of for SAP security ECC. Okay, but in GRC, Yes. instead of using the term T code and auth object, we use actions and permission. Okay, because T codes, Okay. T code perform an action, like SU01 is used for user administration. Understood? So let's Understood. save the data. Data has been saved. So actions and auth object provides us permissions. So that's why it is termed as actions and permissions. Now, if we have to recognize, usually what we do is we do not use this function ID. Instead, we use the T code name only in general when in the organization. Okay, but Okay. this is for just to show, nothing else. Okay, if you want, we can change the name as Okay. well. Mm-hmm. Okay, so this is the reason we are creating this. Then SA38, for SA38 we have to create AA03 basis test add system R3 check the permissions. Yeah, input, they have been inputted,
and save. All right. This तो मतलब data, यहाँ पे अपन जैसे वहां पे रोल के अंदर अपन ये टी कोड असाइन करते थे, वैसे अब यहाँ पे रोल बनाने के लिए अपन फंक्शंस असाइन करेंगे। नो 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 नो, रोल हम लोग पीएफसीजी में ही बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग रोल एक्चुअली बनाते नहीं है। यहाँ पे रोल बनाने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, बट वी हम्म। स्टिल यूज पीएफसीजी टू इनपुट टू क्रिएट अ रोल। इसीलिए हमने दोनों सिस्टम को ओके। लिंक किया है, ताकि होगा। हम लोग क्या करते हैं इन प्रैक्टिकल, इसी सिस्टम में हम लोग मतलब इस रोल जनरेट करते हैं, प्रोफाइल जनरेट करते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं। हम्म। कहते देखिए हमने यहाँ पे अभी 3 ये बना दिए हैं, पर हम्म। अपना ये फंक्शन कहाँ गए, या A01, A02 एंड A03। ऑल राइट, वी हैव क्रिएटेड हम्म। फंक्शंस। ओके। क्लोज these three function. Okay. I will show you how to import roles in later classes only, when we'll go to role management. Okay. ओके। So now access list. Okay, sorry. First we will have to create a rule set. Creating. Oh, okay. Okay, it is. Okay. Let's see this. Create. Create. No. Let's close it. We have created a rule set called a rule set. All right. ओके। Let's close this. Now we will create a risk. Let's create risk. Wait a second. What was the name? A risk 1, A risk 2. All right. So it will be A risk 1. All right. Risk type segregation of duties. ओके। Okay. Business process, basis, description, test, risk level medium, status active. Okay. Now, first we add two functions. Okay. हाँ, where okay, it is not there. Cancel. Then, जो हमने अभी क्रिएट किया है वो आई थिंक सिंक्रोनाइज नहीं हुआ सिस्टम से। गिव मी अ सेकेंड। क्लोज। क्लोज। मोनिका गिव मी अ मिनट। ओके। ओके।
Yeah, sorry for the delay. All right. Okay. Let's create. I've tried to run a sync job so that the functions that we have created is synchronized. Mm-hmm. Let's create the risk. It is still not synced. Okay, just to show, see, I'm using old ones, A11. Mm-hmm. Okay, Okay. and since we have to add two risks, so risk one will contain A11 and A12, SC01 and PFCG. All right. These two Okay. conflicting functions are stored in A risk one. Now we will add rule set. It's important to add a rule set. So, Mm-hmm. oh, sorry. Yeah. Rule set ID. See, A rule set, this one we have created. Mm-hmm. Select. Okay. And then risk owners. It is not important, but we actually add risk owners for every risk. Okay. Mm-hmm. Let's see how many risk are owners are present available. Okay, there are two actually. Okay, it was showing that there is already a risk created with these two functions. That's why I'm adding a third one. Mm-hmm. Okay. So if there's if there's a risk, okay, now yeah. So this risk have three ones. See this A risk one, A risk two. See this risk I have created. It contains three functions: A11, A12, and A13. If we want, we can check the function information Mm-hmm. here as well just by clicking on it. It contains SPRO. Okay. Okay, we can check this information here as Mm-hmm. well. So this is the risk we have created under the rule set. Okay, let's Mm-hmm. open it and we can check under the rule set, A rule set. It contains these three functions. Now, suppose how it works is, suppose a user have SU01 already, all right, and he is Mm-hmm. requesting SPRO and PFCG both T codes. Mm-hmm. Okay. Okay. Suppose when as soon as he requests, the system will run a risk analysis. Is it safe to Mm-hmm. add all the three T codes to the user? It will check that Mm-hmm. there is a risk called A risk one. Okay, Okay. it, it will show Mm-hmm. that there is a risk called A risk one, and we have selected a wait a second. Yeah, here we have selected a risk owner. This Mm-hmm. the name of the risk owner. All right. So as Mm-hmm. soon as this Okay. is triggered that there is a risk with the request will be sent directly Mm-hmm. to that risk owner. Okay. Then he will Okay. check the information. Mm-hmm. Is it safe to provide this authorization to the user or not? Assign these T codes to the user or not? If it is, then he will accept Mm-hmm. it. Otherwise, he will reject. Okay. Okay. Do you have any questions in this, मोनिका? थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। ओके, मैं आपको थोड़ा मतलब अभी मेरे माइंड में ना पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही कि हम क्यों बना रहे हैं ये चीजें, क्यों कर रहे हैं ऐसे। ओके, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये बताया था ना। मतलब ये पार्ट मेरे को समझ में आ गया कि हम
तीन टी कोड एक साथ असाइन करे और उसका रिस्क एनालिसिस करा और ऑन उसके रिस्क ओनर के पास में वो चीजें चली गई, वो पार्ट मेरे को क्लियर है। ओके बट मेरे को वो जो चीज है ना कि हम फंक्शंस के अंदर टी कोड ऐड कर रहे हैं, फिर उसका रिस्क हम बना रिस्क आईडी बना रहे हैं, फिर रिस्क आईडी में वो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं, फिर वो रिस्क एनालिसिस हो रहा है। वो चीजें मेरे को थोड़ी सा ऐसे हो रहा है ओके कि मतलब हम रीजन क्या है इसका करने का। ओके रीजन क्या है कि हर एक चीज ये जीआरसी का सिस्टम है, मींस जीआरसी को आप अगर जीआरसी में आप बोलेंगे टी कोड एंड ऑथराइजेशन ऑथ ऑब्जेक्ट, हम्म वो नहीं हम्म समझेगा। वो क्या समझता है? हम्म एक्शंस परमिशंस। ओके। वो समझ गई मैं। हाँ हाँ। हाँ। तो तो, तो तो उसकी फंक्शन वर्क करने के लिए हमें उसके टर्म्स को यूज करना, जो है उसके टर्म के हिसाब से चलना पड़ता है। तो जैसे मेन काम क्या है कि वो चेक करता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क तो नहीं है। ओके। उसका मेन हम्म काम यही है कि सारे सिस्टम को मतलब जो भी काम हो रहा है उसको एक सिस्टमेटिक वे में लेके चले, उसके लॉग क्रिएट करे ताकि उसकी ऑडिट हो सके। और ठीक है, उसके उसके ऑडिट हो सके। सिस्टम में कोई रिस्क है तो वो आइडेंटिफाई हो जाए और उसकी उसको तुरंत रिपोर्ट कर सके। ऑलराइट। तो उसके लिए हमें ये सब जो है चीजें बनानी पड़ती है, मीन्स टी कोड एंड auth ऑब्जेक्ट को हम लोग फंक्शन में ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे आईडी बना के दिखा रहा हूँ ना, अदरवाइज यूजुअली इन ऑर्गेनाइजेशन वो फंक्शन आईडी जो है वो SE01 ही रहने देते हैं। ओके। सेम एज द नेम ऑफ द टी कोड, सो दैट इट इज इजी टू रिमेम्बर हम्म फॉर एवरीवन। तो हुआ क्या कि उसको हमने कर दिया। उसके बाद से जो है एक रिस्क क्रिएट करते हैं कि या अगर हमने इन दो चीजों को एक साथ ऐड किया तो एक रिस्क हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? हम्म इतना समझ में आया आपको? ओ- नहीं, कंफ्यूजिंग हो गई होगी। मतलब एक सेकेंड से जितना मतलब मेरे माइंड में पिक्चर बन रही है, जैसे कि लेट से मेरे पास में एक टिकट आई कि मेरे एक किसी यूजर ने पीएफसीजी और एसपीआरओ टिक कोड की रिक्वेस्ट की और उसके पास में ऑलरेडी SU01 था। हाँ। तो उसको असाइन करने से पहले मैंने एक रूल सेट बनाया जिसके इन अंदर इन दोनों फंक्शंस को मैंने डाल दिया, ये चेक करने के लिए इससे कोई रिस्क क्रिएट होगा कि नहीं होगा। यू राइट। इट्स लाइक कि ये जीआरसी का कोई मतलब फंडामेंटल रूल है कि आपको डायरेक्टली किसी यूजर को परमिशन एक्सेस देने के बजाय पहले ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स करेक्ट, दैट्स मतलब ऐसा कुछ। एग्जैक्टली करेक्ट। सी, लेट मी टेल यू। ठीक। ओके। जीआरसी, दिस इज इट्स अ मशीन, ऑलराइट, इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ मशीन। ओके। हम हम्म जब तक उसको इनपुट नहीं देंगे कि ओके। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम उसे ये नहीं बताएंगे कि रिस्क क्या चीज है, व्हाट इज रिस्क, हम्म it cannot provide us any हम्म help. It is useless. Okay, that's why we have to add ओके। these functions to the list, and then add that those risks means हम्म we can add one risk to the rule set, or we can add hundred or thousands of risks to the rule set. That this is the risk, and actually we use a normally use a rule set called global rule set in the organization. Okay, which contains all the risks. हम्म Do not here I've ओके shown you that there are multiple rule sets created, but in actual we in practical life we usually use this one global rule set. ओके। Okay, it contains हम्म all the risks in the organization, whether it's risk one, it's हम्म risk two, whatever the client wants it to be called. Okay, ओके। so uh, are all the risks are stored in the rule sets. Now, when the risk analysis will be done, it will check the rule set and all the risks within which are stored in that rule set. Whether it's 100 is available in the rule set or 1,000 is available in the rule set, it will cross reference with all the risks if it is safe. If the request is creating any risk for the organization or not. जैसे कि आपने कहा कि हमने जो हम्म है यूजर, जैसे अभी अभी एग्जांपल यूज किया था कि SU01 यूजर के पास है, उसने PFCG और SPRO की रिक्वेस्ट की। ठीक है। अब वो रूल सेट चेक करेगा, सारे हम्म रूल्स मतलब रूल सेट चेक करेगा और उसमें प्रेजेंट सारे जितने भी रिस्क हैं हम्म सबको सबसे जो है उसको कंपेयर करेगा।
ठीक है, सपोज रिस्क नंबर, तो रूल सेट हम बनाते हैं या ऑलरेडी बने हुए रहते हैं? रूल सेट अब बनाने पड़ते हैं, नहीं सॉरी मीन्स एसएपी एक रूल सेट प्रोवाइड करता है बट हम उसको एडिट करते हैं, उसमें और रूल सेट ऐड करते हैं, ओके, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द क्लाइंट. अच्छा, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट. Yeah, depending on the project, ओके, ठीक. it is customized depending on the project that this will create the risk. Suppose अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस में डील कर रही है तो उसके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होंगे. कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लेट्स से डेवलपमेंट बिल्डिंग डेवलपमेंट कर रही है, इट्स अ डेवलपर, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है तो उसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क होंगे, ओके. कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है तो उसके पास डिफरेंट ओके. टाइप्स ऑफ रिस्क होंगे, तो अलग अलग रिस्क प्रोवाइड होते हैं, ऑलराइट. So we this ओके. all the risks are customized and rules are customized based on the client. Okay, उसमें मल्टीपल रिस्क सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट. दिस इज डिस्कस ड्यूरिंग व्हेन वी create the blueprint. Okay, Okay. for example, I think yeah, see, under business blueprint, see, we can see risk and control identification. All right. So this is the Okay. part where we recognize what are the risks to the organization, what could cause the risk. Okay. Means what and we Okay. identify that if we add SC0 and PXG together, it will be a risk, and we mention it there. We create these risk ID during the blueprint creation, and at the time of installation, we simply upload these rule sets. Okay. Okay. मतलब हमने सिस्टम को ये बता दिया कि ये रूल दीज आर द रिस्क. नाउ जब भी वो सिस्टम रिस्क एनालिसिस करेगा, सभी रोल्स की, सभी टी कोड्स की, सभी यूजर्स की, जब भी वो रिस्क एनालिसिस करेगा तो जब वो इन रिस्क से रेफरेंस लेगा, अगर उसको कुछ जो है कोई कुछ ट्रिगर होता है कि ये दिस इज द रिस्क, मींस वी कैन नॉट गिव SC0 and PXG to a single user, to a single user. It will prevent the risk and it will redirect the request to the risk owner. Okay. 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 I hope this much is clear. Yes. Now it's Okay. Sorry, yeah. So what I would do, ask you to do is create a risk, okay, a rule set and a function, try to create it, and let's and we will start tomorrow. Okay. Okay, sure. How to run risk